skeleton. And limb bones, what are the limb bones? What are the limb bones, Neil? The appendage is the Very good. So first of all, what can be asked to you that whenever I talk about pectoral girdle, it is containing two bones. One is clavicle, another one is scapula. The name of the shoulder bone can be asked to you. As I informed you before also, this labeling, one time this diagram has came in which you have to do the labeling of scapula. You have to do the labeling of glenoid cavity because this glenoid cavity is the characteristic feature of pectoral girdle, right? Why? Because between the junction of clavicle and scapula, you will see this cavity is found. And in this cavity only this your shoulder, this arm comes, right? So that is where this glenoid cavity becomes important. You must know कि glenoid cavity अगर है तो वो shoulder bone से related है. Then if I talk about pelvic girdle, first of all, you must know it is another name of hip girdle and it contains three bones, ilium, pubis and ischium. These are the three bones. Then again, you must know that in the pelvic girdle, we have a depression which is known as acetabulum. And the femur bone fits over here, right? Now, right. बहुत पहले जब सीपीएमटी होता था तब ये नंबर आ जाते थे कि ह्यूमरस का नंबर कितना है, रेडियस अल्ना का कितना है, कार्पल्स का कितना है, लेकिन पिछले 7 ईयर से तो इनके नंबर्स नहीं आए. इफ यू कैन लर्न देन इट इज ओके बट इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी. उसके बाद what you must know, I will tell you. Yes, you must know that we in the hands we have radius and we have ulna. This is radius, this is ulna. You must know that in the radius we have a hyaline cartilage. You must know that hyaline cartilage is present in the radius, right? Then Right. if I talk about the carpal bones, basically आपको पता होना चाहिए कि carpal bones कहाँ से arise होती हैं. जैसे कि ये तक हमारी radius थी, right? उसके बाद you can see that we have the metacarpals. ये वाली जो fingers हैं, these are the metacarpals. And then before that we have the carpals. इसकी लेबलिंग नहीं आती, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट हमको बीइंग अ बायो स्टूडेंट, हम डॉक्टर बनने वाले तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि कार्पल मेटाकार्पल क्या होता है. देन यू मस्ट नो दैट इन द नी वी हैव पटेला बोन. द नेम ऑफ द नी जॉइंट इज पटेला. नी क्या बहुत जल्दी टूटती है, जरा सा भी गिरते हैं सबसे पहले चोट हमारी नी में ही आती है. Then what else? You will not get the question that which is the largest bone. You will not get this question. लेकिन ये आपको पता होना चाहिए that femur is the heaviest and the largest bone. Then if I talk about tibia and fibula, again we must know tibia and fibula. Tibia आगे की पैर की bone है, fibula पीछे की bone है. Again we have tarsals and we have metatarsals, right? ज्यादा कुछ इस चैप्टर में ऐसे नहीं पता होना चाहिए आपको. Now, coming to axial skeleton, very important. Why I am saying it is very important? Because first of all, axial skeleton में हमारा skull भी आता है, हमारे ribs भी आते हैं, हमारा sternum भी आता है, हमारा vertebral column भी आता है. आपको पता होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ. First of all, you must know we have two condyles. Do you know what is the meaning of two condyles? Yes. What is the meaning of two condyles? Meaning the brain had. इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मोनोकॉन्डाइलिक होता, अगर एक ही कॉन्डाइल होता तो क्या होता, अगर दो है तो क्या होता है? अगर एक ही condyle होता तो we would have been able to turn our head 180 degrees instead of just 90 degrees. ओके वेरी गुड. सो बेसिकली वी हैव टू कंडाइल्स, राइट? आपको स्कल की Right. बोन्स का नंबर पता होना चाहिए. वी हैव 29 बोन्स. जब व्हेन आई से स्कल, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट माय क्रेनियम आल्सो. I am talking about the face also. I am talking about the hyoid bone also, and I am talking about the capsule also. Right? Then Right. what skull? Cranium we have brain box.
Very, very important. Foramen magnet is a characteristic feature of cranium. It is found here only. And the cavity which is present in the brain, it is the cranial cavity. ये सारे numbers आपको पता होने चाहिए. Frontal आगे का चेहरा, parietal पीछे का चेहरा, टेम्पोरल कान के पास, ऑक्सीपिटल आंख के पास, स्फेनॉइड एंड एथमोइड. इसमें बेसिकली आपको याद क्या करना है कि पैराइटल और टेम्पोरल दोनों दो दो होती हैं, बाकी सब तो एक होती हैं, लेकिन सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए. हमारी स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं दे आर इमूवेबल एंड कॉल्ड एज स्टिचर्स. कोई जॉइंट मूवेबल नहीं होता. हम सर तो ऐसे हिला लेते हैं, लेकिन बीच का सर का पार्ट कुछ नहीं हिलता कि फ्रंटल हिल रहा है कि टेम्पोरल हिल रहा है, नथिंग. देन यू मस्ट नो दैट, एक बार ये नीट का क्वेश्चन था, डैश इज अ डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन ऑफ द स्कल, जहां से पिट्यूटरी बॉडी निकलती है. इट इज स्टेला टर्किका, और यू कैन से स्टेला ट्यूरकिका, राइट? राइट. ओके. नाउ इसके बाद आपको ये ज्यादा बोन्स भी याद करने की जरूरत नहीं है. इनके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल. सी, मेरा जो नीचे का जबड़ा है वो तो मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर का नहीं कर रहा है, राइट? तो मैंडिबल्स, दिस वी मस्ट नो. उसके बाद जो हमारा लोअर जॉ होता है, इट अटैचेस विद द क्रेनियम. इसको कहते हैं क्रेनियोस्टाइलिक. हमारा जो नीचे का जबड़ा है वो क्रेनियम से जाके जुड़ता है, इट इज क्रेनियोस्टाइलिक. और जो टंग की बोन होती है इसको हम हायोइड बोन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? देन ईयर्स की बात करें तो तीन बोन्स आती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज. स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन होती है, राइट? They will not ask you which is the राइट. smallest bone, but being a bio student, you must know which is the smallest bone. Ribs again 12, 12 में से 7 जो हैं ट्रू रिब्स हैं, 5 हमारी फॉल्स रिब्स हैं, और 7, 5, 3, 8, 9th और 10th फ्लोटिंग रिब्स हैं. क्यों? पहली वाली स्टर्नम से कनेक्टेड है, बाकी की जो 5 हैं वो खाली कार्टिलेज से कनेक्टेड है, लेकिन स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है. जो यूजुअली रिब्स को स्टर्नम से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है. ये स्टर्नम है हमारा, यू कैन सी दिस इज द स्टर्नम. जो चीज स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है तो वो एक्चुअली रिब्स की चीजों को फुलफिल नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको फॉल्स रिब कह रहे हैं. वो कार्टिलेज से कनेक्टेड है. और जो बाद वाली है वो 11th और 12th है, जो कि फ्लोटिंग होती हैं, राइट? उसके बाद we know that if I talk यस, यस. about the breastbone, it is the sternum only. Then we must know, yeah, this is the vertebral column. ये चीज पता होनी चाहिए, फिशेस के पास कोई स्टर्नम नहीं होती, राइट? उसके राइट. बाद राइट. ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल. ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्सिजियल. 7, 12, 5, 5, 4, राइट? एनी डाउट? नो, नॉट सर. देन वर्टिब्री की फिर हम बात करें तो वी डोंट हैव एनी कैविटी इन द वर्टिब्रीज. के बीच में कोई कैविटी नहीं होती, इसलिए इसका टर्म होता है एसीलस, राइट? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एग्जैक्टली करता क्या है. एक तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर पोस्चर देता है, एक मूवमेंट अलाउ करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो नेक में प्रेजेंट होती है, राइट? हमारे नेक में यहाँ पर. तभी जो लोग लैपटॉप में बहुत ज्यादा काम करते हैं उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगता है, वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं. तो इट इज द नेक वर्टिब्री. देन
थोरैसिक वर्टिब्री चेस्ट में होते हैं। लंबर वर्टिब्री हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे हैवी हमारे लंबर वर्टिब्री होते हैं। उसके बाद सैक्रल वर्टिब्री एक सिंगल बोन बनाते हैं। दीज आर द सैक्रल एंड कॉक्सिजियल टेल बोन बनाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जॉइंट्स। एक तो पहली बात है, जॉइंट्स की स्टडी को हम आर्थोलॉजी कहते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इनके दूसरे नाम भी आपको पता होने चाहिए। इमूवेबल जॉइंट को सिन आर्थरोसिस, स्लाइटली मूवेबल को एम्फी आर्थरोसिस और फ्रीली मूवेबल को डाई आर्थरोसिस भी कहते हैं। राइट। राइट राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फाइब्रस, तो स्कल में मिलता है। उसके बाद अगर हम कार्टिलेजिनस की बात करते हैं, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में सबसे पहले हमारे हाइलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स आ जाते हैं और सेकेंडरी में हमारे फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आ जाते हैं। फ्रीली मूवेबल में जो भी बोन्स का एंड होता है वहां पर जो कार्टिलेज आता है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और किसी भी दो बोन के बीच की जो स्पेस होती है उसको साइनोवियल स्पेस कहते हैं, और उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यूजुअली आफ्टर सर्टेन एज पीपल हैव द प्रॉब्लम इन देयर नीज, उनके घुटनों में दिक्कत आती है, तो बेसिकली लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है फ्लूइड कम हो गया, वो यही साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कम हो जाता है, क्योंकि यही जॉइंट्स को नरिश करता है। देन जॉइंट्स कहाँ पर है, वैसे तो ये बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, दैट वी हैव साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रीज। देन हिंज जॉइंट, हिंजेस हमारा एल्बो और एंकल, हमारा एल्बो और एंकल हिंज जॉइंट है। पाइवट जॉइंट वी ऑल नो नेक जॉइंट, हमारी नेक जॉइंट जो है वो पाइवट जॉइंट है, और जो कॉन्डाइलर जॉइंट है वो हमारे जॉ में, इन अवर जॉज वी हैव कॉन्डाइलर जॉइंट। ये क्वेश्चंस देखने में बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन अगर हमारे नीट के पेपर में ये आ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे, सो वी डोंट हैव टू लीव देम। तो जॉइंट्स की पोजीशन तो वी मस्ट नो, और कुछ भले ही ना पता हो लेकिन इनकी पोजीशन हमें जरूर पता होनी चाहिए। सैडल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से डेवलप होता है। सैडल जॉइंट इट इज प्रेजेंट इन द थंब, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होल्डर, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द मसल्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये एम्स का पार्ट है मसल्स का। बेसिकली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपने सुना होगा बोन डिसलोकेट हो जाती है, स्लिप्ड डिस्क हो जाती है, स्प्रेन आ जाता है, स्प्रेन का मतलब टेंडेंस में टियरिंग हो गई है, ऑस्टियोमाइलाइटिस बेन में स्वेलिंग आ गई है। वर्टिब्री में स्वेलिंग अगर आ जाती है, अगर बोन की स्वेलिंग है तो उसको हम ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं, और अगर वर्टिब्री की स्वेलिंग है तो हम उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ वर्टिब्रीज, अगर कैल्शियम और फास्फोरस बोन में कम हो गया है तो इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, और अगर विटामिन डी कम हो गया है देन वी कैन हैव द कंडीशन ऑफ रिकेट्स। राइट। देन दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स की जो फीमेल का पेल्विस होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, फीमेल का जो स्कल होता है वो कंपेरेटिवली लाइटर होता है, और जो शोल्डर होता है वो नैरो होता है। राइट। ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, सीजमॉइड बोन्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। ये तीनों क्वेश्चंस एक एक बार नीट में आ चुके हैं। देन ये आपने मुझे पहले ही बता दिया था मोनोकॉन्डाइलिक क्या होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में द स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। राइट। देन the bone which is formed by the tendons at the joint are is the knee bone। कौन सी ऐसी बोन है जो टेंडेंस के जुड़ने से बनी है, इट इज द पटेला और द
नी बोन, ये आपको पता होना चाहिए। द एग्जाम्पल, इनफैक्ट सीजमोइड बोन्स का नाम भी पता होना चाहिए। देन यू मस्ट नो, बर्ड्स के केस में जो उनकी पेल्विक गर्डल होती है, उनकी कंडीशन में एक स्ट्रक्चर होता है सिन सैक्रम। सिन सैक्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आपको पता होना चाहिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, राइट। देन डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स मीन्स अभी भी हमने करा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स अगर होता है तो इट इज बेसिकली रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। आर्थराइटिस हो जाता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने देखा होगा, इट इज वेरी कॉमन, घुटने तो बहुत जल्दी लोगों के खराब हो जाते हैं, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आना। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी एक जॉइंट का डिजीज होता है। इसमें धीरे 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 हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होती जाती हैं, एंड एक्चुअली वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर इट। डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो ही डजंट गिव्स एनी सोल्यूशन, ही ओनली आस्क यू टू गो फॉर अ बेटर डाइट, बट it every time it doesn't works also. Then osteoporosis, it is again a age dependent disorder, कम होने लगता है। Then but only this much is important. Now I will give you 5 minutes, 10 minutes, whatever you will say. वैसे तो मैं आपसे कहूंगी कि पहले आप 2 मिनट इन टिप्स में चले जाओ, ये टिप्स एंड फॉर्मूला जो हम देते हैं वो इसीलिए देते हैं। और इफ यू वांट आई कैन स्क्रॉल अप आल्सो। व्हाट? Just one second, teacher. I'll read ओके। this. Yeah, teacher. Yeah, teacher.
Yeah, teacher. Yeah, teacher. I remember from my notes, I taught you how the muscle contraction takes place, right? This is written Yeah, that yeah, you are only. sure. This is a very important part. Usually it's been saying 2 to 3 questions are fixed from these topics. And the lines which have been asked in these, they have mentioned this only. That means dash is found in the center of each eye point. It is a Z line. Dash line is found in the middle of A bind. It is M line. Actually लगता है बहुत easy है, but actually it is very confusing.
कि अगर आपको ZMI एक ऑप्शन दिया है तो आपको किस में क्लिक करना है, राइट? सो दैट इज वाई ओवर हेयर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वही यहाँ पर लिख दिया गया है. We are decided. We are decided. Oh, You want me to scroll up also? we are decided. Show the notes which you just explained. Below that, just below that.
I think it was from appendigeal exoskeleton. Ah, this is appendigeal. Neil, are you available tomorrow evening? Like I am available from 4 to 6. Uh, oh, Ma'am will not yet. consult the schedule and then I'll inform you. Okay. Okay. Oh, okay. Yes, teacher. Please hold on.
Yes, yes, yes. Here, could you scroll up for? I wanted to write the carpal bones of the hand. Teacher, you scroll up. I wanted to write the carpal bones. This one? Yes. Don't learn the number. No, no, I just wanted to write. Okay. Okay. Neil, your mother also wants to talk to me? Uh, 1 second, I call. No, no problem. You keep on doing your work. You want to answer? Yeah.
Yes, Rick. Shall I scroll down? Yes. Yes. Yeah, it is. Yeah, it is.
Neil, which is the next chapter which you want to study? Uh, but I'll check and inform. Okay. After 5 minutes, I have another class, so you can do that much you can do. Wanted to talk to my mom, right? तो अभी खत्म कर ले. Yes. Uh, No, I don't want to talk. Neil, I am asking. I don't want to talk. I thought that she wants to talk. I don't want to Ma'am, talk anything. Ma'am, yesterday you said सुष्मिता that मैम you बोल रही हूँ हाँ yesterday you बात said that है। you Acha, no, actually, just I want to inform to Neil also, like we have other students also preparing for NEET. So whenever we teach anything, we want the student not only to give the test, but also कि he must understand everything. राइट कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो वो कर ले अगर नील जैसे आकाश में आप कई बार मुझे बताते हो कि आपको वहां टॉपिक नहीं पढ़ाया गया अगर आपको मेरी तरफ से भी कभी भी बर्डन लगता है आपसे जैसे मैंने आज बोला कि आपको एक हफ्ते बाद 6 चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो इट्स अ रिक्वेस्ट अगर आपको लगता है फ्राइडे तक कि आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो यू मैसेज मी यू डोंट टेक इट एज अ बर्डन राइट नीट यू कांट क्वालिफाई यू कांट टेक इट अगर आप इसको एज अ बर्डन लेंगे क्योंकि बेटा ये पढ़ाई एक या 2 दिन की नहीं है इस पढ़ाई में आपको पूरा 1 साल देना है अपने को राइट right. are you getting sometimes during the class I feel that you are quite tired and means I see we are taking online classes since 10 years so now we understand also if I talk about the sincerity I will give you a rating you are very sincere and I know that you want to study, but I also find that sometimes you are overburdened. आपको वहां से भी कुछ बोल दिया गया है आपको ये लग रहा है कि कैसे मतलब आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है बस आप क्लास लेते चले जा रहे हो so in that case Neil you can see you can inform to me like if I am a bio if I have to take the bio test instead of taking it as a burden please inform me कि आज मैंने पढ़ा नहीं है आप कुछ और पढ़ा लीजिए right I don't want you to take it as a burden I want you to enjoy the classes right Oh, right. right and also you will be giving your class 12th this time or 11th I'll be giving my class 11th. 11th only okay so do you know that in the next month we have the aims का फॉर्म आने वाला है do you know 10 दिन बाद do you know I did not. ओके यूजुअली आकाश में ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए वो हो सकता है आपको तब बता दें एम्स का फॉर्म आएगा जिसमें बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं आप एग्जाम एक बार खाली वो एग्जाम होता कैसे है आता कैसे है उसको आप भरिएगा जरूर आई यू गेटिंग माई पॉइंट Years. राइट बिकॉज सी वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एम्स में एक फायदा है एम्स में हम सिर्फ डॉक्टर के अलावा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स राइट सो एम्स में Right. एक बहुत प्लस पॉइंट है नील कि वो उसके भी बहुत सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड इट इज अ गवर्नमेंट जॉब सो वी ऑलवेज सजेस्ट अवर स्टूडेंट्स की और वो एग्जाम आप तभी नीट क्वालिफाई कर पाओगे जब आप नीट की पढ़ाई मन से करोगे एज अ बर्डन नहीं करोगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट today though you are Years. fresh but most of the time I find that you are quite tired so that's why I informed to Sushmita ma'am also that see you are very sincere you can do you have the caliber you can do it but if you are overburdened आपको कोई भी अगर आपको मतलब मैं तो बायो पढ़ाती हूँ अगर आपको फिजिक्स टीच मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपको फिजिक्स टीचर भी लगे कि नहीं ओवरबर्डन हो रहा है तो यू टेल हिम क्योंकि नीट के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में ही नंबर चाहिए
नील, एम आई करेक्ट दैट यू फील ओवरबर्डन? मतलब ऐसा मुझे ही लग रहा है कि ऐसा है। पर बर्डन का ये नहीं है कि ऐसे जस्ट क्लास से आया तो फिर क्लास में बैठा। आई कांट हियर यू। या टीचर नाउ। या आई कैन हियर यू नाउ। ओके, सो बस यही होता है कि ऐसे मैं जस्ट क्लास से और फिर वापस क्लास में बैठ रहा हूँ, बस उतना ही है और ओके, कुछ नो नो, दैट तो आई अंडरस्टैंड, बट देन ऑल्सो समटाइम्स आई फील कि आकाश में टेस्ट किसी और चैप्टर का है, आप पढ़ कोई और चैप्टर रहे थे, राइट? एंड आई थिंक कि आकाश में भी आपने जो नीट का पेपर देखा हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, सारा सिलेबस बहुत अच्छे। इस बार के वीकेंड में जो आपका टेस्ट लिया गया था, इट वॉज, आई हैव प्रिपेयर्ड क्वाइट इजी पेपर, राइट? मैं आपको एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग नहीं रखना चाहती हूँ, डेफिनेटली इट वाज अ इजी पेपर, उसमें से एक दो क्वेश्चंस हम नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उतना इजी पेपर नीट का नहीं आता है। जस्ट आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना था। वो तो जो मैं टफ टेस्ट अपने सामने लेती हूँ वो तो मैं देख ही लेती हूँ, यू डोंट स्कोर मोर देन 15 आउट ऑफ 30। ये मैंने देखा है, 30 में 15 से ज्यादा आपका स्कोर कभी नहीं आता, राइट? यस। Right, right. That is the exact need paper which you will get, right? और So please, please start planning on everything, and you can do. और ये एम्स वाला फॉर्म आप जरूर देखिएगा, राइट? उसका पेपर कैसा आता है आप जरूर देखिएगा। इट इज ऑल्सो, मतलब उसका वो एम्स अपना बॉडी, आप वो उसमें भी आपको डॉक्टर का ही डिग्री मिलेगा, इट्स नथिंग एल्स, राइट? लेकिन ये है कि वो फिर एम्स में ही आपको, अगर आपका मन है प्रैक्टिस करने का, तो एम्स में ही मिलेगा। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम। और ओके, थैंक यू। थैंक